राशिद के साथ सेशन हो रही थी, तो we talked about the fact that in counseling the most important thing is empathy. So empathy का मतलब हम शुरू करने से पहले शुरू करते हैं, और basically empathy का मतलब ये है that you put yourself in the position of the patient. मैंने आपको दिया चाहते. You put yourself in the position of the patient, and then you think according to that situation. You think according to the patient situation, and you feel like that, and show the patient that you understand the problem. So this is the most important thing in counseling, which is the empathetic approach. Or empathetic approach जो है, that helps you a long way, and the patient in understanding कि डॉक्टर जो है उसको उसकी बात समझ में आ रही है. So पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करेंगे. डॉक्टर फारूक से पहले कुछ स्टार्टिंग कमेंट्स ले लेते हैं सर. नहीं, ओके, हमारी बंद हो गई. Okay, so we are going to talk about next. ये नहीं चल रहा आपका, आपने लगाया हुआ नहीं है. Just give us a minute. इसको देखते क्या पता चलेगा. चेक कीजिए. सेल है. ये मैंने ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डबल एड डाल दें. अच्छा, डबल एड. So what we are going to talk about is that what is counseling. ये हमारा outline of presentation है. Counseling क्या होती है, हमारे objectives क्या हैं counseling के, किस तरह के stations आ सकते हैं, what is the logistical planning that is required when you are trying to counsel a patient, and how do you handle counseling stations. So पहली slide से शुरू करते हैं. Next please. Next. Next. शेयरिंग स्टॉप हो गई है. काइंडली स्लाइड शेयर करते हैं दोबारा. आगे चले, मैं आगे ये जिसके बाद में. Okay, so basically counseling is a process by which one person is going to help clarify the situation to the other person. So एक information transfer is the objective. The other objective is to decide what are we going to do next and to answer the queries of the patient. So there are three objectives of counseling. So there are three objectives of counseling. The first objective is transmission of information. The second objective is to help the patient decide what are we going to do next, what the situation is, what are the pros and cons of the situation, and to reach a decision. Next, please. I'm sorry, I had to change my position because मैं उसमें परेशान हो रही हूँ थोड़ी सी. Okay, so the objective of learning counseling is first that you want to develop a rapport with the patient and her family so that you can understand each other clearly. Then to develop a method of communication. Communication is the most important thing in obstetrics and gynecology and in all medical fields nowadays, because if you're not able to communicate well with the patient, sometimes it results in dire consequences. This morning, I read a very unfortunate event which has happened in India. There was a doctor in India, gynecologist. A patient died of PPH in her hospital, I think in Kerala. And the patient's relatives raised such a hue and cry against the hospital and the doctor and her husband that the doctor committed suicide. Died. So communication जो है, that is one window that can help prevent situations like these. So one of the objectives also is to give information to the patient, to help the patient in decision making, and obviously to gain confidence of the patient. So the patient understands that the doctor knows the situation well and is there to help her. And
The last objective, which is probably for you guys the most important objective of all, is that it will help you pass your examination, because if in the examination talk station you are able to satisfy the examiner that you have got good communication skills, then it is very easy to pass that particular station. Now, when you're going to do counseling stations, there are going to be different kind of counseling stations. So I have put over here 3 counseling stations, because of which I think that these 3 counseling stations are pretty important and pretty difficult too. The first one is breaking bad news. It is never easy to break bad news. For example, intrauterine death has happened. In a patient who conceived after 10 years of miscarriages, missed abortion has happened. There is azoospermia. So all kinds of, and malignancy. So all these are basically bad news, and it is very difficult to break these news. So it is important to develop the skill of handling these kind of situations. Then reaching decisions, myomectomy versus hysterectomy, IUCD versus oral contraceptive pill, DNC or PIPEL. So these kind of decision-making tools these are also counseling stations. And the most difficult of all is the anger situation. So as I have told you about an anger situation, a patient died or a baby died or something serious happened. So the patient's relatives are angry. In our hospital as well, a couple of weeks ago, there was a situation in cardiology when the patient could not survive and the family was angry. So these are the kind of stations that you should be prepared to handle. Now, for breaking bad news, as I already told you, that there are multiple situations that can come to you. And the reason for telling you these examples are that you should be prepared with these examples to be able to handle the situation. So breaking the bad news of malignancy, talking about azoospermia, talking about tubal blockage, intrauterine death, and I will add premature ovarian failure over here, because these are the kind of news which can actually make or break a family. The husband can leave his wife, the wife can leave the husband. So these are situations which have to be handled by the doctor in a fashion that the information is transferred, but at the same time, they do not result in any adverse effect on person self and on the personal relationship. So these are important from that perspective. The second I said was decision making, and in decision making, a couple of examples I shared with you, but again, hysterectomy versus medical management, choosing a contraceptive, IUCD versus Marina, myomectomy versus hysterectomy, removal or conservation of the ovaries is always a debatable topic, and abdominal versus vaginal hysterectomy, जिसका हमने हलिया निकाला कि vaginal hysterectomy खत्म ही कर दी. So these are the important topics on which decisions need to be made. The third is the anger situation, sudden maternal death, complication during a pregnancy, यूरिटारिक इंजरी हो गई है. हम लोग कितनी काउंसलिंग करते हैं for placenta accreta, but even then, if there is a bladder injury or if there is a gut injury, we really have to explain to the patients again and again that why did it happen. So these are the things which can sometimes lead to anger situations. Leaving a pack can actually be a very acute situation and seriously compromise baby at delivery. And we are all gynecologists, we have faced this situation, and every time we find actually very difficult to deal with these situations. In situations के master वैसे आपके पास बैठे हुए sir जो है Professor Farooq Zaman, he is the master of dealing with anger situations, and so we have something to learn from him. मुझे जब कोई मसला होता है I always go and seek his counsel कि अब मैं क्या करूं. So सवाल ये पैदा होता है कि आप काउंसलर के रोल में हैं, तो when you are sitting in an, ठीक है सर, मैं आप सारी स्पेलिंग्स, सर मुझे कह रहे हैं भाई स्पेलिंग्स गलत है, सो मैं सबको बता रही हूँ कि अब मैं ठीक कर दूंगी और मैं अच्छी बन जाऊंगी. सो जी सर, मेरे लोकल बॉडीज का काउंसलर, ठीक है सर, मैं मुझे माफ कर दे, मैं इसको ठीक करूंगी. So you are the counselor in this particular situation, and as a counselor you need to have certain qualities. हर शख्स अच्छी काउंसलिंग नहीं कर सकता, कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी. You have to be looking eye to eye to the patient, you have to be polite, you have to introduce yourself, you have to talk the language of the patient, you have to understand the situation of the patient, you have to make sure that the attendant of the patient is with the patient when you are counseling. So there are qualities that you need to have when you are doing counseling. Then the setting of the station, if you are doing counseling of the patient, वहाँ phone की घंटी, unnecessary interruption, unnecessary noise नहीं होनी चाहिए, and it should not be you sitting across the table to a patient. Generally counseling is recommended on a round table, and internationally if you see the offices of very senior
people in their waiting area or in their anti rooms, you will find round tables over there so that they can talk one to one with the people and their families. So ये student counseling में भी यही principle apply होते हैं, patient counseling में भी यही principle apply होते हैं. The setting that you create, that is very important, and the environment is also very important. गर्मी नहीं होनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए. These are the kind of things which are important logistics of counseling, and you should be able to understand them and make sure that when you are doing counseling, all these things are present. Now, there are certain qualities, as I said, of a good counselor. By unconditional positive regard, we mean कि आपने patient को एक positive तरीके से with regard deal करना है. Even if the patient is being harsh or rude or loud, you have to show a certain kind of dignity and be respectful to the patient and her family. You have to show an empathetic understanding. And when we started the talk, we talked about empathy, and we said that it is very important to empathy is not sympathy. Sympathy में होता है हम रहम खा रहे हैं. So when we are empathetic, हम patient पे रहम नहीं खा रहे, हम patient को ये demonstrate करें that we understand your situation. And sometimes the patient will find it very difficult that you actually really understand her situation, but this is your slide पे एक दफा click क्यों क्या हो गया, next क्या हुआ, ठीक है, मैसेज आया था कहते थे चेंज शेयर उनसे पूछे क्वालिटीज आ रही है तो बड़ी देर की लगी हुई है स्लाइड. अभी I'll go back. चलो ठीक है, चलो. So empathetic understanding होनी चाहिए, then some warmth and openness to your personality so that the patient and her spouse or the family can ask questions to you, and clarity कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उस बात के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है. And the last thing is having a constructive approach so that you build up on information. थोड़ी बात बताएं, फिर उसको build up करें, फिर patient से पूछें आपको समझ आ गया, फिर उसको कुछ बताएं, फिर उस पे build up करें, and so on and so forth. So these are the 4 or 5 qualities which a good counselor should have. Setting की बात हमने की थी, pre-decided time होना चाहिए, it should be exclusive. Oblique sitting honi chahiye, which I told you, a round table is good, and preferably the availability of spouse, and if the spouse is not present, then the availability of somebody from the family who's important to the patient. Environment, I told you, it should be calm and quiet. There should be no interruptions, no calls, no messages coming in at the time, so that the patient understands that you are the patient is the most important person for the healthcare professional at that time. Now, how are you going to handle this situation? The first and the most important principle is that you introduce yourself. So in an examination, this becomes very important, but in a real situation as well, sometimes to the family and to the other people, you have to introduce yourself. You have to find out the education of the patient so that you can understand what is the vocabulary that she would understand and what is the language that she would be comfortable in. And counseling should always be done in the language in which the patient is comfortable. You have to maintain eye contact. अगर मैं तुमसे बात करेंगे और मैं छत की तरफ देखना शुरू कर दूं, तो you will be very, very uncomfortable, and so would the patient be. So that is why it is important to maintain eye contact. और ये जो मैंने 3-4 चीजें अभी बताई हैं, इन चीजों के नंबर हैं. So when you are in a counseling station, जो मैंने पहले बात नहीं बताई थी वो ये थी that your marks are going to be divided into 2 sets. On one hand, your marks are for the information that you are supposed to tell the patient, जो actual बात बतानी है, उसके नंबर है. तो जाहिर है वो इन्फॉर्मेशन एक एफसीपीएस कैंडिडेट को किताब से मिली होगी, उसको नंबर मिलेंगे. लेकिन उसके अलावा उसको इस चीज के नंबर मिलेंगे, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, वो पेशेंट की एजुकेशन समझता है, उसकी लैंग्वेज का कंफर्ट देखता है, डिफिकल्ट टर्म्स को आसान करके बताता है, उसकी आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, उससे पूछता है कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं, उससे पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चंस. सो इन अ काउंसलिंग स्टेशन देयर आर मार्क्स फॉर एक्चुअल कंटेंट and their marks for counseling. So that is why you should be very, very careful when you are doing counseling. Then hand movement is very important in counseling. एक ये है कि आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, और एक ये है कि you are too much clumsy and moving your hands all the time. जैसे कि politicians बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं इस किस्म के काम में. So आपकी एक calculated hand movement होनी चाहिए जो इतनी ज्यादा ना हो कि वो पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कर दे, but at the same time it should be showing that you are a human being and you are trying to make emphasis on things and so on and so forth. जो हमारे आवाज का उतार चढ़ाव है और जो हमारी हाथों की मूवमेंट है वो एक ही पर्पस सर्व करती है, and that purpose is basically to emphasize on the patient couple of points and then
where you are not giving that kind of emphasis, तो वो कम important बातें हैं या उनको इतने emphasis की जरूरत नहीं थी, तो इस चीज का ख्याल जरूर रखना है. And then the tone of your voice. There are places when you need to tone down a lot, and there are places जहां आपकी tone जरा different होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप note करें, और सर इसकी again बड़ी अच्छी नकल उतारते हैं कि जो monotonous tone होती है, डॉक्टर रुबीना मैंने मरीज देख लिया, मरीज को बुखार है, बुखार के साथ उसकी पल्स तेज है, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, और वो जो है ना वो हमें मारने को तैयार है. अब what does it convey to you? Nothing. But if you use your voice and you use your tone to put variation in your voice, जैसे कि टीवी पे आप देखते हैं, जैसे कि खबरों में आप देखते हैं, जैसे कि आप presentations में देखते हैं, अपनी day to day counseling में देखते हैं, the tone of voice is very important, and the variation in tone of voice is also important. So basically, I'm not going to take you in this detail क्योंकि ये जरा different तरीके से हमने की हुई थी, लेकिन basically जो है, when you are going to start a counseling station, again I'm saying the setting is important. Your qualities of a good counselor should be there with you. You should be able to introduce yourself to the patient, to ask her what is her education, what is her preferred language. Make sure that your tone of voice, hand movement, and eye contact are there, and then start talking to the patient. Then what you're going to do is going to vary with each station. But there's a general formula or a general key to a counseling station. So in any counseling station, there are going to be 80 or 75% marks for the actual content. कि आपने असली बात उसको क्या बताई. So आपने कहा कि तुम्हें possibility है कि तुम्हारी report में malignancy निकल आए. तो what is the percentage of possibility that she will become malignant? इस किस्म की information की 80% weightage है. But there is a good 20% weightage of counseling techniques. However, we are all human beings. So when a counseling station is being taken, अगर आप इस 20% का ख्याल नहीं रखते, sometimes your other 80% is also affected. Because if you're not doing good counseling at the station, you might be giving the right information, but the method of giving the information is wrong. So these two domains are actually interchangeable. That is why this 20% is extremely important. But the reason that I said that this is 80%, because of the fact that many people think the counseling station पे सिर्फ counseling attributes लेके जाएंगे, information important नहीं है, but that information is actually extremely important and it should be kept in mind. So पहला station मैंने जो आपके लिए तैयार किया हुआ है, that is breaking bad news, and Zara has a couple of counseling stations as well. ठीक है, निदा ने करना है तो तुम्हारा कर ले, या इसका एक दिखा लेती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन कर लेते हैं. सो एक की मैंने ब्रेकिंग बैड न्यूज की स्ट्रेटजी ये की हुई है. अगेन द स्टेप 1 इज सेटिंग ऑफ द पेशेंट. So the step 2 in that is that you involve significant others, which means the husband. So if you're sitting in an exam and there's only one patient, so what is the question that you're going to ask her? You're going to ask her कि आपके husband या आपका कोई family member है जो कि इस session में बैठना चाहे. That will demonstrate to the examiner that you know that it is important to have a partner at this point in time. The other thing is that you have to be seated. Counseling can never be done standing up. So बैठे time दें उसको, सुकून से counseling करें. Look attentive and calm. So if you are flustered, you cannot do counseling of anybody क्योंकि तुम तो खुद ही इतने परेशान हो. Then you have to be in the listening mode. It is not that counseling is only meant, लेकिन इस listening mode के ऊपर मैंने इम्तिहान के लिए एक बात कहनी है. So sometimes if it is an anger situation or if it is a depressive situation, तो patient की counseling हुई भी होती है कि बोलता जाएगा. So आपने ये देखना है कि आपने उसको कहाँ रोकना है और कहाँ उसको आपने अपनी बात भी बतानी है. ये ना हो कि अगर 12 मिनट का स्टेशन है तो 10 मिनट मरीज ही रोता रहे और आपको गालियां देता रहे और बाकी 2 मिनट आपके पास रह जाए, and you don't have enough time to counsel the patient. So make sure that you are in the listening mode, but also you need to have the expertise to make sure that you move on in the conversation and you don't stay put in the same situation. And obviously your availability is important and privacy as well. फिर उसके बाद आ जाता है perception. Perception का मतलब ये है that you ask open-ended questions. So basically you ask the patient, what do you understand about the situation? And sometimes the patient will tell you, if there is a death of a baby, the patient will say that my perception of the situation is you did not do enough to save my baby. So you have to understand what is their perception. Unless you understand their perception, you cannot answer their questions and you cannot become a good counselor. So using the patient's vocabulary in these situations and in your responses is important so that they can understand better. Then is
Basically, you have to respect the rights of the patient. You have to make sure that you make appropriate comments. और आपने इसके अंदर patient की permission भी लेनी है for counseling. Then giving information which is knowledge, कि आपने पेशेंट को बताना है कि इस सिचुएशन में ये होता है, लेबर के अंदर ये मनूवर्स होते हैं, ये करने पड़ते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में फीटल हार्ट ऐसे इफेक्ट होता है, एसिडोसिस हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपने क्लियरली पेशेंट को देनी है. टेक्निकल टर्म्स as less as possible, but sometimes there is no choice and you have to use terms, so you have to explain the meaning of those terms. Then the rate of delivery should be such कि मरीज को समझ भी आ जाए. जैसे कि मेरा रेट ऑफ डिलीवरी सब थोड़ा सा फास्ट है, एंड माय रीजन फॉर बीइंग फास्ट इज दैट आई वांट टू मेक श्योर कि हम एक दो स्टेशन कर लें. देन हैविंग एन एम्पैथेटिक अप्रोच, मेकिंग श्योर दैट यू एक्नॉलेज द इमोशंस ऑफ द पेशेंट. हाउ डू यू एक्नॉलेज द इमोशंस ऑफ द पेशेंट? माय क्वेश्चन टू यू, क्या करोगे? पेशेंट रो रही है, मैं आपका समझ सकती हूँ कि आपके दुख को समझ सकती हूँ मैडम, इस तरह उसको कह के. हाँ, थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ गुड आंसर. सो मैं क्या करूंगी, मैं अपना बता देती हूँ. मैं पहले टिश्यू दूंगी, पेशेंट को टिश्यू दूंगी. Offer a glass of water as well. I will give her about a couple of seconds time so that she can cry a little bit and make sure that I'm there. I will hold her hand and then I will say that I understand it is a very difficult situation for you. ठीक है? So मैं इसको इस तरीके से कहूंगी, क्योंकि जो तुमने बात कही है वो बात गलत नहीं है, लेकिन कई बार पेशेंट्स एंग्री होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कैसे समझ सकती हैं, आपके साथ कभी हुआ है तो आप कैसे समझेंगी? So maybe a little bit different approach, but basically what you're saying is appropriate. Then recognize the origin of emotions. वही बात जो मैंने कही कि जी हम समझ रहे हैं कि आपको कितना ये मुश्किल लग रहा है. फिर उसके बाद आपने काउंसलिंग के दरमियान में अपनी बात को समराइज भी करना है और चेक करना है कि पेशेंट को समझ आ गई है. मैं छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ. एक मुझे अपनी नई प्रैक्टिस का वाकया याद है जो कि मैं कभी नहीं भूलती, and I try to remember it all the time. मेरी एक पेशेंट थी, she was around 60 years of age. She came with postmenopausal bleeding. I did her endometrial sampling and the report came out to be uterine cancer. ठीक है, मैंने उनकी और उनके बेटे की काउंसलिंग शुरू की. The husband was not here. और मैंने कोई आधा घंटा काउंसलिंग की उनकी. जब आधा घंटा मैंने काउंसलिंग कर ली तो बेटा कहता है कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगी ना. अब मैं समझी ये उसकी रिस्पॉन्स है कि मैं उनको ये समझा ही नहीं सकी कि प्रॉब्लम क्या है. So we need to understand कि जो हम बोल रहे हैं वो उनको भी उस तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. So मेरा लेसन ये था कि सिर्फ आपका बोलना important नहीं है. You have to understand that the patient is understanding the problem or not. So then you have to keep on summarizing the information that you're giving them. And the last is that you have to develop. कभी भी कोई मीटिंग इस बात पे एंड नहीं हो सकती कि आपने उसको काउंसल कर दिया और उसको बता दिया, न्यूज ब्रेक कर दी, या आपने उसको एंगर सिचुएशन में उसको बता दिया. आखिर में कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए. सो प्लान ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कई हो सकते हैं. सो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो जरूरी है आपके पेशेंट के लिए. सो आई विल स्टॉप ओवर हियर एट दिस स्टेशन एंड आई विल हैव द फर्स्ट स्टेशन जो कि हमारी पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, वो मोलर वाला, वो लगा दीजिए, फिर इसको देखेंगे. और उसमें सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी अस्सलाम वालेकुम मैम मैंने प्रिपेयर किया. डॉक्टर साबा. इमरान भाई वो शेयर करवा इसको शेयरिंग बंद करेंगे वो कर दीजिए. जी बेटा शुरू कीजिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा है, मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ. आपका नाम क्या है? मैम पेशेंट की करनी है ना काउंसलिंग? जी जी बिल्कुल. आप हमें सिनेरियो बताएंगे पहले जो आपको लिखा हुआ मिलेगा या कुछ नहीं? मैम जी सिनेरियो तो मेरे पास है, लिखा हुआ आ रहा है, बीच में इंटरप्शन हो रहा है. एक्चुअली हमारे पास नहीं आ रहा है. इफ यू कैन रीड आउट द सिनेरियो फॉर अस. एक मिनट. Ma'am, it is a counseling station which topic is molar pregnancy. The case scenario is age 32 years. हटा दिया. Ma'am, 32 years, married for 7 years, gravida 3, para 0 with 2 miscarriages, with history of molar pregnancy is followed by suction evacuation. Her last menstrual period is 27th of December 2021. Beginning expected date of delivery on 4th of October 2022. Presented with ultrasound report showing molar pregnancy.
She is not having any known comorbidity. On examination, she is vitally stable. Body mass index is normal. She is looking pale. On abdominal examination, abdomen soft, non-tender. On vaginal examination, there is no bleeding. यूट्रस साइज के बारे में कुछ बताएं? Yes, ma'am. Uterine size is about 12-week size. और एमिनोरिया? Yes, ma'am. Amenorrhea of 3 months. ठीक है. Section of questions. मेरे पास भी चलिए बेटा शुरू कीजिए. So previous two pregnancies also molars or no? Ma'am, she was saying that vesicles were present on the suction evacuation. Not histopathology report evidence नहीं है, लेकिन जी मैम. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा है. मैं गायनी के शोबे से बसता हूँ. मैं आपसे आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगी. आपका नाम क्या है मैम? देन आई विल आस्क हर अबाउट हर एजुकेशन. देन देन मैं उनसे कहूंगी कि मैं आपसे, अगर आपके साथ में बात करना चाहती हूँ, अगर आप चाहती हैं कि अगर आप मेरी बात अकेले सुनना चाहें तो आप अकेले सुनना चाहती हैं, अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हैं तो आप उनको बुला सकते हैं. एंड देन आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में क्या मालूम है मैम? अगर शी वाज सेइंग कि मुझे नहीं. खाली ऐसे ही बताओगे? जी मैम. खाली लड़की को मरीज बना लो, उसकी काउंसलिंग करो, किसी की काउंसलिंग करो. मैं बन जाती हूँ आपकी सबा. मैम, आप स्टार्ट करें, मैं बन जाती हूँ आपकी. एक पेशेंट होना चाहिए, वरना यू कैन नॉट डेमोंस्ट्रेट काउंसलिंग. चलिए ओके ठीक है मैम. मैम. जी सबा थैंक यू. स्टार्ट करें. हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबा है. मैं गायनी के शोबे से बसता हूँ. मैं आपसे आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी. आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है. अच्छा, आयशा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक पास किया हुआ है. आयशा, हम आपके साथ आपके हस्बैंड हैं इस वक्त? क्योंकि मैं जो बात आपसे करना चाह रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आपके हस्बैंड भी आपके साथ हों, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो. नहीं, वो अभी मेरे साथ नहीं आए हुए. चलिए ठीक है. अच्छा, आपको अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ मालूम है, जो आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, बस मैं ये लेके आई. उन्होंने कहा कोई मसला है, बच्चा नहीं है और बड़ी बीमारी बताई है, तो आप प्लीज मुझे बता दें. मैं बहुत परेशान हूँ ये अल्ट्रासाउंड लेके. चलिए ठीक है, आप परेशान मत हो. मैं आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि आपकी रिपोर्ट में क्या है. मुझे बहुत जी. अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पहले भी आपकी 2 दफा जो अंगूरी हमल वाली प्रेगनेंसी होती है वो आपको हो चुकी है, और अभी भी अल्ट्रासाउंड में यही आया है कि अंगूरी हमल वाली प्रेगनेंसी है. मैं आपकी अच्छा. हालत समझ सकती हूँ. इस हालत में जो भी हो, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ इस टाइम हो रही होगी और बहुत परेशानी भी हो रही होगी. लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस परेशानी से निकाल लें और आपको सही हल बताया जाए, और आइंदा इस किस्म का मसला तो मत. डॉक्टर साहब, ये मुझे बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? ये मसला क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या मेरे अंदर कोई खराबी है? नहीं, आप रिलैक्स हो जाएँ, आपके अंदर कोई खराबी नहीं है. इस तरह के मसले जो हैं काफ़ी वजूहात की वजह से हो सकते हैं. जैसे कि आपको तो 2 बार भी इस तरह का मसला पहले हो चुका है, तो दोबारा इसलिए भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ये मसला हुआ है. आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? जिस तरह मैं बताना चाह रही हूँ, आपको कुछ समझ आ रहा है? डॉक्टर, आप बताएंगी तो समझ आएगी, मगर अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. ठीक है, आपको पहले भी 2 दफ़ा अंगूरी हमल हो चुका है. अंगूरी हमल क्या होता है, पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है. अंगूरी हमल जो होता है, उसके अंदर हमल नहीं होता, हमल की जगह पे गुच्छे बने हुए होते हैं और उसमें बच्चा भी नहीं बना होता. तो इसलिए इस तरह के हमल को जो रखना होता है अंदर बच्चेदानी में, वो हमारे लिए खतरनाक होता है. इस तरह के हमल को हम ज़ाया करवा देते होते हैं. और रही बात आपके सवाल की, जो आप पूछ रहे हैं कि मुझे ही बार-बार क्यों हो रहा है, तो जिनको 1 या 2 बार ये हमल हो जाए, उनमें दोबारा होने, इस तरह का हमल होने का चांस भी हो जाता है. जैसे अगर 1 बार हो जाए तो 1% हो जाता है, अगर 2 बार हो जाए तो 15% चांस हो जाता है कि दोबारा इस तरह का हमल हो. लेकिन आप परेशान मत हो, इस तरह के हमल के बाद भी 80% चांस होता है कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपको बच्चा हो जाएगा. ठीक है? अब आपको मैं अच्छा. अंगूरी हमल के बारे में, अब आप अच्छा, आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे बीच में रोक के पूछ लीजिएगा. मैं आपको सारा समझाती हूँ कि अंगूरी हमल का क्या है सारा कुछ ना. अंगूरी हमल में गुच्छे जी. बन जाते हैं और बच्चा नहीं होता, तो इसलिए हमें इसे ज़ाया करना होता है. पहले भी आपकी सफाई हो चुकी, जैसे कि आपको पता है, लेकिन मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है. मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से सफाई की गई थी. हम अपने सही तरीके से, खास तरीके से आपकी सफाई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंदर ही रहने देंगे तो आपको खून चलने का खतरा हो सकता है. आपको ब्लड की कमी हो सकती है, खून की बोतलें चढ़ानी पड़ सकती हैं. इसलिए ज़रूरी है कि हम इसकी सफाई करवा दें.
आप तो चाहेंगे कि डॉक्टर इसकी साहब सफाई हो जाए? अभी जो मेरा बच्चा है, क्या उसमें भी अंगूरी हमल हो सकता है क्या? वो तो पहले क्या गुच्छे वाली बीमारी थी ना, क्या इस वाले हमल में हाँ भी हो जी, सकती है क्या? अभी भी आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अंगूरी हमल ही आया हुआ है। अभी भी आपके इसमें यही आया हुआ है। अच्छा, लेकिन आप तो परेशान अब मत आप क्या हो। कर तो डॉक्टर अब आप क्या करेंगी? जैसे कि अब मेरे हमल हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे? इसको दोबारा से जाया करवाएंगे और हाँ कैसे जी, हम इसको करवाएंगे? ज़ाया करवाएँगे, लेकिन चूँकि पिछली बारी आपने प्रॉपर आपको इस अंगूरी हमल में ये होता है कि ज़ाया करवाने के बाद हमें डॉक्टर के पास आके अपनी खून की रिपोर्ट करवानी होती है, हमें जरासीम की रफ्तार देखनी होती है, जो हमारा एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी उसे कहते हैं, जो औरतों में होता है, वो हमें देखना होता है। अंगूरी हमल का बताया जाता है उसमें कि वो खत्म हो गया है पूरे तरीके से या नहीं हुआ है। तो आपके केस में आपको हमारे पास आना पड़ेगा, आपने बस सफाई मजीद करवा कोई के और चले टेस्ट जाना भी है। करवाएंगे डॉक्टर, या सिर्फ बीटा एचसीजी करवाएंगे? हाँ जी, अभी आपका हम बीटा एचसीजी करवाएँगे उसके बाद है हम आपकी प्लान करेंगे कि हमने इसकी सफाई कैसे करनी है। सफाई के लिए आपको हम बड़ा नशा देंगे, लेकिन उसके नुकसानात तो होते हैं, लेकिन हम अपनी प्रॉपर टीम के ज़रिए हमारे सारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स होंगे, उसमें हम आपकी सफाई जो है उसकी प्लान करेंगे। ट्यूब के ज़रिए पूरे हमल को अंदर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको दाखिल रखा जाएगा, आपकी खून देखा जाएगा, आपको खून ज़्यादा तो नहीं चल रहा। उस हिसाब से आपके सारा कुछ डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ। मैंने ना आपकी टर्मिनोलॉजी पे कमेंट करना है। पहली बात अंगूरी हमल, दूसरी बात सफाई, तीसरी बात बड़ा नशा। I would not use this terminology with my patient. मतलब अगर आपने एक दफा उसे अंगूरी हमल कह भी दिया तो आप उसे बताएं कि इसको मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, देन यूज द टर्म मोलर प्रेगनेंसी, नॉट अंगूरी हमल ऑल द टाइम। वो बड़ा ही जी मैम। चैलेंज है, वो आपको मतलब सुनने में बड़ा अनकंफर्टेबल है। दूसरी बात सफाई, जिसको आप कहेंगे, जिसका मतलब है कि यूट्रस को एम्प्टी करना या इवैक्यूएट करना, तो फिर आप इवैक्यूएशन का लफ्ज यूज करें। तीसरी बात यह है कि बड़ा नशा नहीं, वो जनरल एनेस्थीसिया है। आप उन्हें कहें कि हम आपको बेहोशी देंगे, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। ये बड़ा नशा, छोटा नशा, ये टर्म्स नहीं सही। डोंट यूज दीस टर्म्स, यू आर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द आंसर दैट यू आर गिविंग। तुम बात ठीक कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से बता रही हो वो ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये जी है मैम। कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है अबाउट जो रिकरेंस रेट की दी है, वो कंप्लीट और पार्शियल मोल पे डिपेंड करता है। In all probability, because she is having recurrent molar pregnancy, so in all probability इसका complete मोल होगा। लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको देनी चाहिए, जो कि एकेडमिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन हो। फिर प्लान ऑफ मैनेजमेंट, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, आगे हम किस तरह से चलेंगे, व्हाट इज द फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, बिकॉज़ यू हैव टू एम्फसाइज दैट द वुमन इज 32 years of age and married for 7 years. ये बड़ी इंपॉर्टेंट जी मैम। इन्फॉर्मेशन कि पेशेंट के पास कोई बेबी नहीं है। So what is it that you can do which will help change the fate? Actually, not much that you can do, but you will have to talk about it. ठीक है, ये मेरा फीडबैक है जो आप कर रहे थे। आप डॉक्टर स्वरूप का भी सुने, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें। You agree with me? So basically क्या है, मोलर में आपने करना तो वही काउंसलिंग है, आपने डिजीज के बारे में बताना है। जब आप स्टेशन पढ़ते हैं तो आपको उसी वक्त डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपने किस चीज के बारे में बात करनी है। So one is what is the diagnosis, number two if it is recurrent what is the background, problem है क्या, वो आपने बता दिया था कि प्रॉब्लम क्या है। आपकी अप्रोच जनरली ठीक थी, बट यू वर अ बिट मोनोटोनस आई वुड से। थोड़ी सी अपने अल्फाज में फ्लक्चुएशन डालो और वही अल्फाज बार-बार रिपीट ना करो। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हर hemoglobin is important, so you should talk about baseline and further investigation, and I would also like to see you do a X-ray chest as a baseline. So baseline में X-ray chest, beta HCG, CBC and investigations for anesthesia आप करेंगे। उसके बाद आप उसको बताएंगे कि हम आपका क्या प्रोसीजर करेंगे। रिपीटेड डीएनसी की जो आप बात कर रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, because it will affect the endometrium. So you will say that we are going to do a suction only, and then you are going to monitor the beta HCG. किसी और का कोई कमेंट, और आपका अपना डॉक्टर सभा कोई कमेंट करके बता सकती हैं। जी मैडम इनकी रिकरेंट हो रही है, तो हम इन्हें अभी भी मोलर के बारे में ही काउंसल करेंगे कि हम इन्हें आगे बताएं कि कोरियो और इन्वेसिव मोल का रिस्क भी है, वो सारा भी हम साथ ही एक्सप्लेन कर दें कि हम अभी वेट करें सक्शन का पता कि उसके तो बाद बताएं। do it without a histopathology report। आप उसको खत्म करते वक्त ये जरूर कहेंगी कि जब आपकी histopathology report आएगी तो we will do another session talking about things which you can name but you don't have to explain it to the patient. That will be for the purposes of the example. यस मैम, अगर वो कहती हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी दे दी गई है तो फिर हम कर सकते हैं बात। जी बिल्कुल ठीक है। pathology बताते हैं तो फिर आप आगे काउंसल जरूर करें। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। हाँ,
मैम इसमें फॉलो अप भी तो बताएंगे ना कि इसको आफ्टर सक्शन इवैक्यूएशन के बाद इनको कंट्रासेप्शन कौन सा यूज करना चाहिए और किस तरीके से जो फॉलो अप प्लान गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि डीएनसी के बाद 6 मंथ तक इसको फॉलो। जी मैम। And it is important to realize that because the patient is 32, she has no life issue, she would not be interested in your contraception. That is why you will have to emphasize that contraception in this particular case is extremely important. Yes, sir. एक तो पेशेंट को इसको ना कह के इसको हम ये बताएं, आप पेशेंट आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आप इस तरह से बोलें कि इनको ये बताएं. Now in this particular case there are two aspects to it. One is that you are counseling about the molar pregnancy, its outcome, its management and its follow-up. And the second is that she's got this problem on repeated occasions. And so there will be counseling regarding repeat of or likelihood of a repeat of this and possibilities of its causes and what can be done to minimize the chances of repetition of molar pregnancy. So what so far has been discussed is the management of molar pregnancy. And first of all, I'd like to make a comment about Professor Rubina's presentation, which was excellent. And I would want that this presentation should be disseminated to the candidates so that they can reflect on each of those slides and imbibe the information given in those points. Those are inculcate all those qualities in your patient or counseling of the family. So you to revise from time to time and practice those things in actual situations. Not only for the purposes of passing the examination that you will be doing it, that should be part of your clinical acumen. And when you start doing that, then that becomes something natural to you, and you don't have to recall or remember from the slides of the presentations and then act according to that. Then you become like that. So that is number one. Number two, of course, preparation for the examination. Number three is then in a given situation or a given station, how do you proceed? Now, in this particular situation, and then it was important that, as Professor Rubina said, that you shouldn't be talking in monotones. And Dr. Sabha was, so far as she was describing, it was rather monotonous, one. Secondly, it was rapid fire. You were going on in a kind of fast pace, speaking to the patient. What you should be doing is that variation in the tone and sound, that is known as inflection. Inflection of your speech should be such that there is उतार चढ़ाव जो होता है तो वो उस तरीके से हो वो होना चाहिए. तो इसमें ये है कि the patient is educated till metric, she said class 10, and so you tell that this is a kind of pregnancy which is not normal, and in this case simplifying it like that I'll simplify it for you, that it is a kind of pregnancy in which the placental tissue, that is for the patient, it may not be factually correct or technically or scientifically correct like that, in which the baby is not formed, but the rest of the pregnancy that transforms into abnormal structures, and they have their implications, and therefore the pregnancy has to be terminated and evacuation. There are various methods, or what method you have depending upon the duration of pregnancy, that you will say that this is what we are going to do, and वो उस तरीके से हम करेंगे. और फिर उसके बाद ये जब आप बता देते हैं, तो it is also important to tell that since this particular situation involves certain risks, because it is important that
whereas you do not terrify the patients with the complications, you at the same time be truthful and inform the patients about the risks which are involved in a given situation. And therefore, you will tell that this is a condition which has potential risks, and for that, the patient has to be kept under observation for a certain period of time, and during which there will be a protocol of management, in the sense that she'll have to make certain visits, she'll have to have tests, she'll have to have, say, ultrasound or x-rays and things like that, and how long has it is important for her to avoid having another pregnancy. Now, this is for someone who has molar pregnancy for the first time, and that's it. But someone who has had repeated pregnancies, then again you have repeated molar pregnancies. In that, then you have to, that's a further bad news. And you have to tell something about why it happens, and what are the management possibilities of that, which is not an easy thing. तो आप बताइए कि क्या सर थैंक यू सो मच सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम एनेस्थीसिया रिस्क और सारे सर्जरी के रिस्क पेशेंट को बताएंगे सर, वो बताते हुए तो हम खुद ही आधे डर जाएंगे कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, हिस्टेक्टोमी हो सकती है। आप जब एनेस्थीसिया और सर्जरी के रिस्क बताते हैं, वो उस पे एम्फसाइज करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है इसमें। इसमें तो आपने जो मोलर प्रेगनेंसी का रिस्क है उसके बारे में बात करनी है। आप अगर पहले कहो जी आप ये करने जा रहे हो, ये सफर करने जा रहा है कोई बंदा यहाँ से गुजरने वाला तक, आप कहोगे देखो आपका रास्ते में चालान हो सकता है, आपकी गाड़ी का टायर फट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है। Now this is something which can happen, but do you consider this when you undertake a journey? Similarly, you don't tell that there will be complications of anesthesia or there can be. Well, those are associated. So you would, I personally would not start with complications. That every procedure or every step that you take that has a potential of एक कदम उठाते हैं तो आपके पाँव में मोच लग सकती है, you can sprain your ankle, you can but those are not heavy and you're active, you're doing it. Therefore, जब आप कहते हो कि ये इस तरह से, इसके लिए के लिए आपको एनेस्थीसिया की जरूरत होगी, आपको इसमें सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत होगी, and I will tell the patient about complications only if she asks. जो रूटीन एनेस्थीसिया है, रूटीन सर्जरी है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस ऐसा सच बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर प्लेसेंटा एक्टिवा है तो आप जरूर बताइए कि उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, उसमें ये कुछ हो सकता है, उसमें हिस्टेरेक्टमी भी हो सकती है, या मोलर प्रेगनेंसी, उसमें आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड बताइए। मैं इस रेफर करूंगा अगर कोई कहे कि हर पेशेंट को आप टीएनसी होनी है, यदि आपको एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपको प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वो तो आप पहले से उसमें खौफदारी कर दें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। टाइम हो गया सर अस्सलाम वालेकुम सर, पूछना है क्या हम मोलर वाले पे सेक्शन नहीं कराएगी तो रिस्क आपको कार्सिनोमा बढ़ जाए? सॉरी, ये बड़ा अच्छा कमेंट है खुदा का। हाँ, ये मेरे पास, मैंने देखा मेरे पास 4 आर्टिकल हैं इसके, वो मैं शेयर कर दूंगा। इसमें मेल फैक्टर होता है ना, बेसिकली मेल भी और दूसरे जेनेटिक फैक्टर। हां, क्योंकि इसमें डॉक्टर फॉलो कुछ इससे रिलेटेड ये है 4 मैंने आर्टिकल है। एक है रिकरेंट मोलर इन 5 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज, एक है रिकरेंट मोलर प्रेगनेंसी, तो 2 सफे का आर्टिकल है, बड़ा अच्छा है इसमें। और एक दूसरा 4 आर्टिकल है, कंसेंट यू दो। इसमें ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो है दिस रिकरेंस इज वेरी वेरी रेयर, सो इट इज ओनली इन फॉर्म ऑफ केस रिपोर्ट्स इन सर्टेन पेपर्स। उसकी बात करनी जरूरी है, इसमें जेनेटिक काउंसलिंग की बात करनी जरूरी है, एंड समथिंग व्हिच आई वुड नॉट टॉक अबाउट इज ऑल इसमें मेल पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी भी होती है। सो इफ अ वुमन वांट्स टू हैव अ नॉर्मल बेबी, one of the options is to change the male partner. This is your information, आपने काउंसलिंग में मरीज पे बात नहीं करनी। हाँ, वो मेल पार्टनर्स को चेंज करने की बजाय अगर वो कह दिया जाए कि आप इसमें donor where there is
it is permitted or it is हो सकता हो वहाँ पे artificial insemination IUI donor IUI Donor egg. और donor egg की बात भी इसमें आती है donor egg and donor IUI दोनों चीजें हैं नहीं दोनों का है repetitive hereditary form moles in women with different partners would suggest that an oocyte problem leads to molar development और उसमें यह है कि since abnormal fertilization and gametogenesis the cause of this condition artificial insemination donor or in vitro fertilization with donor ovum or surrogacy with donor sperm and ovum is a viable solution Makes sense, to right? prevent repeated molar pregnancies. Now this is something which is relevant for this topic whether it is relevant within our context तो वो लेकिन ये information देना जरूरी है because it imparts the patient that knowledge that this is something over which within our environment the possibilities of successful management are extremely limited and therefore adoption would be something that you may suggest in that because that would be something which is acceptable or which is possible in our environment. Is it necessary to if suction not done it increases the risk of why wouldn't suction be done? मैं तो ये सवाल पूछूंगा because suction forms the basis of this. चलो ठीक है तो ये तो हो इन्होंने एक मतलब मुझे समझ नहीं So basically the concept is suction आपने करनी है आपकी बात का हमें मतलब नहीं समझ में आया कि आप क्या कहना चाह रहे हो but basically suction has to be done. सर ये मैं कह रही हूँ कि पेशेंट लेके आ रही है वो कह रही है मैं सक्शन नहीं करा कुछ लेक्टेंट में पेशेंट है ना उसको ये एम्फेसिस जरूर देना होना है कि अगर नहीं कराओगी तो कैंसर में बदल जाएगा नहीं वो कैंसर में जरूरी नहीं बदलेगा लेकिन आपको वो तो ट्रीटमेंट का हिस्सा है ना ये तो ऐसे ये बोलता है कि जी मैंने डिलीवरी या सिजेरियन नहीं कराना मैंने प्रेगनेंसी को ऐसे ही रहने देना मतलब ये तो बात तो नहीं है मैंने नहीं कराना तो आप मत कराया कराओ वो अगर थोड़ी सी बात और तरह से करनी थी जब आप